Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You can use any IDE. This is an Eclipse. You must have downloaded, many of you. If somebody hasn't, download it, or some other, you have brackets or you have IntelliJ, or whatever you have. It's good to have any kind of IDE, which will be, yes, question? सर मुझे एक्सेप्ट कीजिए रिक्वेस्ट मैं वेब से किया था इस पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है one second मुझे तो कोई रिक्वेस्ट आई नहीं अभी I am not having any request here मैं फिर से करता हूँ फिर yes because I am having participants 16 and that's it. Now this is my IDE and whatever right you see is called a perspective. It's called as perspective. We may talk about it slowly because I'm giving lecture on because maximum times I teach Java. In the beginning we were using NetBeans. NetBeans was developed by the Sun Microsystem itself and they actually created for the Java specially, but then came in the Eclipse and it took over and it's really nice to work in Eclipse because of a lot of features. So there should be one lecture wholly on this Eclipse, okay? But I'm not going to waste time on that because slowly and steadily we will learn this also, right? Because every day we start working on it, it automatically seek jate hain. So isme koi nayi baat hai. So when you open up the Eclipse, it will give you this create new project and whatever, okay? And there's also here something like Java project and class and package and interface, enums, everything is here. So in the beginning, you can create it from here. That because when you start developing things in the Eclipse, you first need a project. Everything is kept in a project, okay? So you have to create a project. The first thing you will do in here will be to create a project, okay? And inside the project will be your classes or interfaces, your whatever you want to build, okay? So you have to create one project. So project means just simple a parent folder in which your everything is gonna be. Project is nothing, special here. It's just a folder, and inside the folder you may create subfolders called packages. So the packages, the project, it's nothing but a folder structure where your file is gonna be. Do you understand? So I create a project that is my parent folder. Then I may create the packages, package 1, 2, 3, and so on. And then inside the packages, I may have classes and interfaces. Then you may build up the Shah Zubair has abhi nahi aaya aapki, huh? So whatever. So inside we have the packages. The packages are nothing but again the folders where you collect your related classes together. Okay. So what I do is first is we'll create a project here like this. Okay. And I called a project name. Maybe I'll call the first. This is my project first. Uncheck this because this 16.0. This is the latest version. They've created a module in Java. Just uncheck this. Okay, don't go through this. And there is the selection of whatever the Java SE standard edition you want to use. You can have the backward compatibility here. You can use 15, 14, and even 1.8, or we used to call Java 8, SE8, and we used to call them 1.8 and so on. So you can use any, many, and all those things, whatever you use. You want to, if you want to go for the backward, any Java SE version, but we will go for 16. That's it. And when you install, you must have seen that it has its own JRE. Sajid Mushtaq, enter. Okay. This Eclipse has its own JRE and all. We don't have to worry about the installing Java and the other things. Before when the Eclipse came in, we have to have Java first installed, JDK installed, then we can use the Eclipse. But now, right now they're integrated and they have all these features of its own. So we don't need to set the path and all for this because it's already there. Okay, it is already in the Eclipse. So we have to just install the Eclipse and that's it. Bingo, just start coding. So I may say maybe next or finish, and he will give me where it's going to be created. Do you want to create a new folder to it and source folder, all those things? I don't worry about these things right now. I just go for finish. So it's creating me here on the left pane. You could see the first. It's the project. It's the project name. So what am I going to create in the project? I'm going to create what I'm going to create inside the project. I may have two things. The first is the packages. The second is classes, okay? And or interfaces later on maybe. So maybe I want to create a package. So I go to the file first, I say new, I say here package, okay?
And package, I call maybe it's P1. Okay, let me create a couple of packages like we were discussing the defaults and protected and private and all. I may not be able to show you all those things today, that thing, because there is a lot of things to learn, like inheritance, like how to create objects, how to create, because there are many who are just seem to be kind of a beginners in the Java programming. So I have to go from the scratch, then build it. But I will show you I create the package P1. Okay, just say finish. So I got the package. So this package is nothing but a folder again. I may create the in source, I will create new package, second package, P2, call it P2. Your package name is small letters. Save finish. So I got a couple of packages now here, P1 and P2. Like we did last time. Now we have two packages, and in this package we have these classes and subclasses. And if it is protected, it can be access the subclasses in the different package also. Okay, so I got P1 and P2. Keep that thing in mind, which we had last time saying. So I created two packages here. Now in the package one, I'm going to create some class. Say create new and class. Okay, create new class. So I create new class. It happens to be in a package P1, which is shown here. And if you see the super classes all the time, java.lang.object, because I told you any class you build, it has to be its father, its parent class has to be the object class. Yeah, right? I told you that there is a one default java.lang. Okay, because I told you if in the beginning that java.lang is a parent folder where everybody lies. Okay, so it's a top package, java.lang, and inside is a class called object class. And whatever you create, it has to be the subclass of the object class. Whatever is in object class, that automatically inherits to your class, no matter what class you create. So object class is the parent class of all the classes you create in Java. Does it make sense? Right? So that is why it is telling you superclass is gonna be java.lang, because when you say dot, it's a package. So how you, if I have something in a P2 and I want it in a P1, or I have something in a P1 and I want to get it in a P2, I have to import P1 dot that thing, P1 dot. So where is it? It is java.lang. So I say java.lang. So Java is a parent folder, uske andar lang ke andar object a class hai, wo mera super class hoga automatically. Write it or you don't write it here. It is immaterial. It is there. Okay? ठीक है ना? So I said package P1 and the class name is, maybe I call my class name first, maybe 1. I call it 1. And I keep O capital. When you name the class, first letter has to be capital. Do you understand? It is a convention. If you write it even small, it will create a small. It's not an error kind of thing, but it's kind of it's etiquettes or condition, convention. It's against the convention. Okay, and I can have here public static void main in it. My first class, one class called 1. It can have the public static void main in it with the string args. It create it for me. If I want constructors from the parent class, it can create for me. We will see those that in inheritance. When you create a subclass and it inherits from this class, and I want all the constructors there, I want all these things inherited abstract methods there, we can chuck them. It will get automatically for us everything. We don't have to do anything. Okay, even if you want to generate comments, because I told you there is a Java doc. The comments there are, this is not just a comment of C and C++, because in Java we build very good, great softwares, and every software has its full documentation. Okay, every Java software has a full documentation, and from these comments we write. These comments are very technical. We write because it creates a Java documentation for us, the full documentation of our project automatically. Do you understand? So that is why generate comments will be helpful. We may have a separate topic on comments itself, how the comments are generated, how the Java doc is created. Does it make sense what I'm doing right now? So I am doing here nothing. I'm writing the name here, the 1, which is my class name. And I am putting up here the public. I can create the modifiers here, like is it public or is it package level or is it abstract or final? And if you could see, the private, protected, and these things are gone. Why? Because I am creating a class here. I'm creating what?
I am creating a class. So class can't be private, protected, or static. Class can be package level. That is, what does the package level mean? The default. Okay. Class can be public. Class can be abstract. Class can be final. What is abstract, final? We will see them later on. So I give it a name and just say finish. And I get created all these things here. It is telling me it is in a package P1. Class name is class 1. Okay. And I got a public static void main here. And here I can do my stuff. I got the main created. It does it automatically for us. Does it make sense? So same way I may create in P1. I may create a new class, call it 2, T capital. Sharik Ahmed has come up. Call it 2. Okay. And now I want it to inherit from the 1 class. Okay. The 1 class has to be, say, kind of a parent class. So I will write here then 1. Java और Langdor ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली है ही, जो भी क्लास में वो तो है ही है. लेकिन अब ये वाला बंदा किसका चाइल्ड है? ये क्लास 1 का चाइल्ड है. क्लास 2 is a child of class 1. So then I say here super class 1. And I don't want public static void main here because main एक ही क्लास में हम रखेंगे. That was our 1 class. और जो ये 2 क्लास मैंने बनाया, ये बच्चा बनाया मैंने, सब क्लास बनाया किसका? क्लास 1 का. So मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 लिखना है. It can do it for us, or later on we can do of our own also. So we can have those things, the constructors and all, but I don't want right now. So if you see now class 2 gets in, and in which package is it? It is in P1 package, and it is class 2, and it says extends 1. अगर आप वहां नहीं लिखोगे, हम यहाँ पर भी खुद लिख सकते हैं extends 1. It means कि class 2 is a child class of class 1. Simple है ना? कोई मसला ही नहीं है. And you see there are 2 tabs. We are given 2 tabs. The 2 classes are open here. 1 class was here and 2 classes here. So I can go back and forth only using the tabs. So it's easy to move around the tabs. Okay. The thing this is called as a perspective. We may talk later about perspective, and it's called Java perspective. If you see here, it's a Java perspective on the right top corner. It is saying Java perspective because we can have our own perspectives where we want, when you're a developer and all, you want many things here which are not here. So we'll keep them and create your own perspective. Okay, that's called perspective. What is called? Perspective. So we discuss them later on. I don't want to waste time on that. So this is the class 2, which is the subclass of class 1. Then both are in a package P1. I may create a new class. Okay, class 3, T capital. And I don't want it to be the subclass of 1. And I finish. Now I got a class 3, which is in the same package P1. Okay, which is in a class 3 is in the same package P1, right? So in the package P1, I got 3 classes, 1, 2, and 3. 2 is a subclass of class 1, and 3 is a non-subclass, but share the same package. So if we have, say, kind of a default variable, something which is default. What is default? Access modifier. We know that it is an access modifier. So if you have an access modifier default, it can be accessed within whole package. Child class or non-child class, doesn't matter. It will be accessed everywhere. So if you have something in a 1, it can be accessed in 2 and 3, but not in the package P2. We understand that. Okay. Now in the package P2, I may create my class. I say what I do. Package P2 पे मैं right click मारूंगा. ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं. आप बाद में इसको आराम से देख के कर सकते हैं. New class. I call it 4. F capital. Okay. And it's not a child class of anyone. So it is going to be in package. What I'm doing is I'm creating class 4 here. It is in a package P2, and it is simply a class. It's a non-child class. I want create into the P2 some class, which is a child class of P1, which is a child class of P1. So how I will do that now? I say right click on the P2, create new class. Now this is the in package P2. But if I say here, name, say for example, 5, class name, first letter capital, then camel casing.
देन आफ्टर दैट केमल 5, उसके बाद केमल केस करेंगे, वो मैं दिखाऊंगा स्लाइड के अंदर. सो नेम 5, बट इट हैज टू बी द हु इज द सुपर क्लास. I want class 1 to be the super class of it. So if I write here 1, that is an error because it means in the same package. But the 1 class is in which package? P1. So P1 package. The P2 know nothing about P1. When you work in a P2, it has no connection with the P1. So we have to do two things. We have to first import the P1. Okay? When I write in a P2 something, I have to add up one line, import P1, like you do hash include in your C, so that you include those files. Now I want to include that P1 into here in this P2 class, which is named 5. Then I have to use the import package P1. I have to do that. Okay, that's one thing. Second thing is I have to tell it कि by 1 जो super class आपका है वो 1 है, लेकिन वो है किधर? P1 के अंदर. So this 1 is not just 1, it is P1.1. We have to write first package name, then the class, which is going to be my parent of it. ठीक है ना? अगर आपको कहीं पर भी पैकेज है, पैकेज के अंदर सब पैकेज भी हो सकती है कि पैकेज के अंदर P1 के अंदर मेरे P3 रखा, वो इसके अंदर रखा, उसके अंदर क्लास है, इसका चाइल्ड है. Then I have to specifically say P1.P3. That class name. सिंपल है ना? पाथ देनी है, कहां पर है. जैसे मैं राशिद मेरे सामने बैठा है, ये मुझे इसको ढूंढना, ये 20 जो इस्लामिया कॉलेज है पैकेज, उसके अंदर .BCA क्लास है, ठीक है, सॉरी MCA है, MCA के अंदर एक पैकेज है MCA 5th, उसमें महराज राशिद है. सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड से इस्लामिया कॉलेज .MCA 5th महराज. डू यू अंडरस्टैंड? सो सिंपल एज इट इज. So यहाँ पे मेरी पैकेज जो ये 4 है, it has to be in a P1, so I will say P1.1. So this is my super class. I'm telling कि मेरा class 5 है, उसका super class कौन है. So I don't have to only give it 1. अगर ये सेम पैकेज में होता तो मुझे वो चिंता करने की पैकेज की जरूरत नहीं थी. जैसे मैंने ये 2 बना दिया, उस वक्त मैंने सिंपल लिखा इसका सुपर क्लास 1 है, बिकॉज दे वर इन सेम पैकेज, दैट्स इट. लेकिन अगर यहाँ पे मैं करूँगा, ये एरर दिखाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से 1, ठीक है ना, and I say finish. This is my, yes, I say finish. Now there is a class 5 and you could see that there is a problem, cross straightway shown. If you click it, so it is saying by तू पहले create class 1 कर ले, class 1 कौन है, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं ना इसको class 1 कौन है, he doesn't know about it. So ये कह रहा है class 1 कौन है, फिर तू ये अब सजेशन दे रहा है, क्या मैं तेरे लिए class 1 खड़ा कर दूं यहाँ पे? तो मैं इसको कहूंगा नहीं, तू ये सब मत कर, तू बहुत अच्छा बंदा है, तू एक काम कर, तेरे को मैं डिलीट करता हूँ. Because Eclipse is such a wonderful thing and it wants to do job for you. ये आपके लिए क्लास खड़ा करके देगा, ठीक है ना. लेकिन मैं अब इसको बताऊंगा कि नहीं भाई, मेरे को पता है कि मुझे क्लास बनानी है, उसका नाम 5 रखना है, लेकिन उसका जो ये ना सुपर क्लास है वो कौन होने वाला है, वो पैकेज P1.1 होने वाला है. अब इसको कोई चिंता नहीं है. क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि ये मेरे लिए एक काम करेगा, ये इंपोर्ट करेगा यहाँ पे P1.1 को, खुद ही करेगा. तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, खुद करना चाहते हो, फिर आपको खुद लिखना पड़ेगा. अब इसने P1.1 को इंपोर्ट किया, अब P2 को पता है कि P1 भी कोई चीज है, उसका 1 आ चुका है इधर, वो इंपोर्ट हो चुका है. डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम डूइंग? समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना, सिंपल ही है. अभी इसमें कुछ ऐसे नहीं, फोल्डर बना रहे हैं जैसे फोल्डर बनाते हैं, ऐसे कुछ हमने किया. सो इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 क्लासेस बनाए. सो पैकेज P1 के अंदर मैंने कहा आपसे कि पैकेज कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, जस्ट फोल्डर होता है. फोल्डर के अंदर चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है. फोल्डर का स्ट्रक्चर बना, तो 2 फोल्डर बन गए, P1 और P2. P1 के अंदर 3 क्लासेस, P2 के अंदर 2 क्लासेस, और ये जो सेकंड है वो 1 का चाइल्ड है, यानी कि इनहेरिट होकर सारा आ जाएगा. और 5 जो है वो जनाब 1 का चाइल्ड क्लास है, यानी कि इनहेरिटेंस होगी. लेकिन क्या क्या घुसेगा इसमें, 5 में क्या क्या एक्सेस होगा 1 का, वो हम करेंगे बाद में, अभी नहीं कर सकते वो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है. 5 में क्या क्या एक्सेस हो सकता है 1? हाँ बताएं यार, मतलब एक्सेस मॉडिफायर में से कौन कौन सा एक्सेस हो सकता है इनटू द 5?
पब्लिक पब्लिक तो Protected. होगा ही होगा, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड होगा, यस होगा, बस दिख रहे हैं बस। आदिल डिफॉल्ट होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों होगा, अगर होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा फिर तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं। वाजिद, कोई बात नहीं, इस तरह से इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है स्ट्रॉन्ग, अभी बिगिनिंग क्लासेस है, यू शुड बी एबल टू आंसर। फरशा बिलाल जो हम फैन ही क्या था पांच ही खबर कही जुनेदा शौकतन तह तालब होमुत, शाह जुबैर जोरे आमुत कैमरस मज, फहीम शौकत खबर कत मस शरा मे बसान। समरीन एंड इरफान अफजल, आपके कैमरास नहीं दिख रहे ना, प्लीज आप कैमरा लाएं। दानिश, क्या 5 में डिफॉल्ट एक्सेस होगा? सर सर किसका, इसका पैकेज 2 का? पैकेज 1 का। पैकेज 1 में 1 क्लास है, 1 में एक डिफॉल्ट कोई चीज है। यस सर। क्या नो वो सर, वो पैकेज 2 में एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि डिफॉल्ट जो होता है वो डिफॉल्ट पैकेज लेवल है, पैकेज के अंदर कहीं पर भी आप डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हो, यानी कि पैकेज P1 है, अगर इसमें कोई डिफॉल्ट वेरिएबल है वो कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि यहाँ यहाँ यहाँ, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन P2 और P3 और सम अदर पैकेज, बिकॉज डिफॉल्ट का मतलब ही है पैकेज लेवल। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? पैकेज लेवल, दैट मींस इट विल बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द पैकेज। वेरी सिंपल चीज है, डिफॉल्ट कैन बी एक्सेस्ड विद इन पैकेज ओनली, पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। अगर 1 में फर्ज कीजिए कोई पब्लिक वेरिएबल है, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, वो कोई चीज ही नहीं जहां वो एक्सेस नहीं होगा। अगर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के साथ काम करता है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस होगा P2 के बाहर, यानी कि प्रोटेक्टेड थोड़ा डिफॉल्ट से बढ़कर है, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस ही नहीं हो रहा बाहर, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि नहीं, हम पैकेज 1 के से पैकेज 2 में भी एक्सेस करना चाहते हैं पैकेज 1 का कोई चीज, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड कहते हैं करो कोई बात नहीं, मगर अगर चाइल्ड क्लास, तो यानी कि प्रोटेक्टेड अगर इस पैकेज P1 में कोई है, वो P2 में एक्सेस होना चाहता है, तो किस में एक्सेस होगा? अगर 1 का चीज था, 5 में एक्सेस होगा या 4 में एक्सेस होगा? हाइड्रोलिया क्लास सब जो पैकेज P5 है ना, वो चाइल्ड क्लास है ना किसकी? 1 की, एंड 1 वाज इन द पैकेज P1, दैट्स व्हाई यहां पे इंपोर्ट P1.1 आ गया ना, ठीक है। तो क्या 5 में एक्सेस होगा प्रोटेक्टेड, जो 1 में 1 का कोई डेटा था प्रोटेक्टेड? यस सर, वो एक्सेस होगा। 4 में होगा? इस 4 में होगा? नो, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड सिर्फ प्रोटेक्टेड इज एक्सेस्ड अलोंग पैकेजेस ओनली वाया सब क्लास, ठीक है ना। तो क्लास 1 फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है, ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ ना, जैसे कोई पब्लिक है जो प्रोटेक्टेड है, मैंने लिखा, मैंने इंट लिखा, ठीक है, मैंने इंट लिखा, ठीक, अब मैंने कुछ नहीं लिखा इसको साथ में AB, अब मैंने साइड में कुछ नहीं लिखा इसको, सो दैट मींस इट इज व्हाट, एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखा इसको यहाँ पे, दैट मींस इट इज डिफॉल्ट। नो, इट इज डिफॉल्ट। इफ यू डोंट राइट एनीथिंग, इट इज डिफॉल्ट, इट इज नॉट C++, it is Java. If you don't write here anything, it is default, and default is a access modifier itself, which we don't write. That means package level modifier. That means this int AB can be accessed within this package only, चाहे सब क्लास ही क्यों ना हो, इसमें P2 में वहां एक्सेस नहीं होगा, पैकेज P2 में एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। If you have some private and all, then you have to write, it. You have to write it like this, private or public. Okay, you have to write it public, or we have number 1 protected, number last. अगर कोई वेरिएबल आपके पास या मेथड या कुछ भी है, उसको आप लिखते हो जैसे क्लास पब्लिक, but you should remember that one file should have one public class. One file, this is not, I'm not saying one one name of it, मैंने कोई भी फाइल जो होगी, हैदर अली आ गया, कोई भी फाइल होगी उसका अपना एक पब्लिक क्लास होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ, because these doesn't have, that's why it's creating, say private PR
we got public PB, we got protected PR. मैंने उसको भी PR लिखा है, इसको PB लिखते हैं, private. These are some variables, okay? What is the error? क्यों दिखा रहा है मेरे को? I don't know why is the error private PB का हमने गड़बड़ किया कुछ? Let's save this first. Multiple marks at this line. What is the I'm doing something wrong. Let's remove this for a while. So what I am saying is कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक public class, दूसरा public class बनाऊंगा, public class second. Okay, I'm creating a public class second here, SECOND. Now this is a problem. Why? Because see what is it saying? You hover the mouse on it. It's saying public type second must be defined in its own file. क्योंकि ये जो file name है 1.java file name है, इसका सिर्फ एक ही public class हो सकता है. Each public class has its own file. I can create a class, but I cannot create it public now. Then it is not a problem. क्योंकि इस file के अंदर जो 1.java है, इसमें सिर्फ एक public class हो सकता है, दो नहीं. Class बहुत सारे हो सकते हैं. They can be protected or whatever. They can be, I mean, not protected. They can be, default or but not public, because class can be either public or default. So they can be default like this. I have written nothing. That means it is a default. When you write nothing, it is a default. That means it can be accessed within a class. So we can have a multiple classes. लेकिन एक फाइल के साथ कितने पब्लिक क्लास हो सकते हैं? Only one. ठीक है, समझ आ रही है? That's the one more point to understand. Then if I want to write something, for example, I'm writing here system.out. ये खुद लिखेगा आपको, अगर सिर्फ एंटर मार रहे हैं खुद लिखेगा, फिर दिखाएगा भी आपको सारी मेथड्स इसके साथ, जितने भी मेथड्स आउट के हैं. अब देखो आउट के कितने सारे मेथड्स हैं, वो सारे आपको दिखा रहा है क्या क्या है आपके पास अवेलेबल. सो इट गिव्स इट्स वेरी हेल्पफुल. इट पुट्स एंटर, ये खुद ब्रैकेट, अपेरेंसेस, टर्मिनेटर्स, ये सब लगा रहा है. और यहाँ मैं कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम. Now I just want to run it for a time being. I just want to run it. So this is system.out.println. We know we had discussed today one lecture on it. Okay, we had to put one lecture on it. What is out? What is println? What is system? Anybody missed it? Watch the video. Okay. Now I want to just save it first. There is showing some errors. It should go. They are all going. This is save all. Remember, when you do in a multiple files, you should press the save all. Haider Ali ko kya masla hai? Okay, so you should put the save all rather than save, because save will save only here. Because if you are working multiple files, आपने वहां से save नहीं किया, यहाँ से save नहीं किया, तो save all will save everything for us. Then you can go here, okay, and say run as and Java application, and you see here is coming on the bottom is coming the output assalamu alaikum. Okay, this is how we run the program. In the console here gets the output. Simply is that you go here, right click, okay. I mean, either you go here or you go here. Okay, you say run as, then you say Java applications, and it will get run. समझ में आ रही है? ठीक है. Now we have what is called as we have a few minutes left. There is some chat coming up. This question is something. Rashid Mehraj, why don't you open up your mic? You can talk. Because I'm. बात करने थे इसीलिए. मेरा सवाल ये है कि मतलब जैसे हमने क्लास 5 जो बनाया उसमें हमने इनहेरिट मतलब उसमें सुपर क्लास हमने दिया 1. अगर हम 2 देते तो मेरा सवाल यहाँ पर था कि मतलब 2 तो हम 1 को इनहेरिट कर रहा है, तो जो 1 में पब्लिक क्लास होगा वो 5 में आएगा, दोनों का 1 और 2 का आएगा 5 में. क्या अगर क्या होगा पब्लिक क्या होगा? हम जो हमारे पास 5.java है एक मिनट मैं सुनता हूँ पहले. देखिए आप बोल रहे हैं कि अगर मैं क्लास 4 है या क्लास 5 है, मैं उसको 2 का बनाऊंगा, क्योंकि 2 खुद सब क्लास है 1 का, है ना, क्योंकि 2 सब क्लास है 1 का, और ये जो 4 है या 5 है वो सब क्लास बनेगा 2 का. ठीक, तो हमें बन गया पेरेंट क्लास 1, उसका सब क्लास 2, अब उसका सब क्लास कौन? 5. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिनट हम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाऊंगा न्यू, ठीक है, क्लास 6, इसका नाम है 6 रखता हूँ.
ठीक है, एंड आई वांट इट टू बी द p1.2 का ये इसका सुपर क्लास होगा लाइक दिस, राइट? ठीक है ना, ऐसे। अब जो ये 6 है ये 2 का सब क्लास है जो कि p1 में था, और 2 खुद किसका सब क्लास है? 2 खुद 1 का सब क्लास है, ठीक है ना। अब आप कहते हो कि क्लास 6 में क्या एक्सेस होगा, आप बोले। हाँ, मेरा सवाल यही था, मतलब जो हमारे पास क्लास 1 में मतलब पब्लिक है कुछ, हाँ, वो यहाँ पर एक्सेस होगा हमारे इसमें, उस पब्लिक या प्रोटेक्टेड जो भी। पब्लिक के लिए तो आपको इनहेरिटेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ पब्लिक है 1 में, ठीक है, अगर पब्लिक है यहाँ पे कुछ, वो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते। पब्लिक मींस कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द जावा एनवायरनमेंट। उसके लिए आपको इनहेरिटेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 में प्रोटेक्टेड कोई कुछ चाहते हो कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज हो कि जो सिर्फ सब क्लासेस के पास जाए, तो उसको आप प्रोटेक्टेड रखते हो। क्या रखते हो? प्रोटेक्टेड जाएगा टू द सब क्लासेस एंड अदर पैकेज, लेकिन सब क्लासेस को, ठीक है ना। तो अगर 1 में है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 में गया, 2 से गया किस में, यहाँ पे, क्योंकि जो आपका 6 अब सब क्लास है, इट कैन एक्सेस एवरीथिंग व्हाट इज टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम 2 and 1 दोनों का, ठीक है सर ना। ये बिल्कुल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन गई ना। Exactly. But there is some catch in it. We will see them in an inheritance. Java has its own mechanism of doing. क्योंकि जो वहां पे ambiguity वगैरह होती थी ना, तो वो यहाँ पे करने नहीं देगा। फिर उसके लिए मैं बताऊंगा, उसके लिए हम इसीलिए हम उसमें इंटरफेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इंटरफेस इसीलिए होते हैं। अब वो डिस्कस मैं वहीं पे करूंगा, यहाँ पे वो चीज मैं नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अ लेंथी टॉपिक। जो आपने छेड़ा ना, इट इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट जो आपने छेड़ा। आपको भी नहीं पता कौन है, आपने जो बोला, it's a very technical, that is why we have a whole lot of new thing called interfaces, but we will discuss them later, okay, because here we don't allow these multi-level and all those things, जहाँ पे ना ये multiple, I mean to say not multiple inheritance हम नहीं allow करते, क्योंकि उससे ambiguity वगैरह हो जाती है, क्योंकि यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो फिर किधर से आ गया, वो चीज नहीं होगी यहाँ पे, वो बाद में बात करेंगे। yes, any more question? We have 3 minutes. If you have more question, we can talk. Otherwise, we go to the just very beginning, just a subtle beginning. That is Java fundamental, because I told you I'll go from the very subtle beginning to the end. So we said these things. We have a program, simple Java program. Then we said we need one space. Public is a keyword. Then we talk about this class is a keyword. And we know public के लिए एक खास बात कि एक फाइल में अपना एक public class होगा, 2 public class नहीं हो सकते। Okay, then the class name is here, which the first letter should be capital, okay, and whatever that is. Now we have the braces here. You see, we should have a braces. Then we have the main class here, main method here, okay. The method should be smaller letters. Variables and methods, they should be small, all small, okay. This is self-explanatory. We had discussed about system.out.println. That is not here, but we have discussed a lot about it. Where is out? If anybody can tell me, because we have just 2 minutes left, can anyone tell me println किस class में? The print stream class. उसका object कौन है? Out. But ये कहाँ पे बनाया हमने? System library. But how can we system class के अंदर? How can we access using the class name? Why we are accessing the class name? Because out is a static. तो ये story तो होगी। So we have print and println, 2 methods we could have, but you could see, no, out has a hell lot of things here. If you want to see, just simply write here, like for example, I cut it and I just put up a dot here, okay. Then you could see how many things we have the out object. That means it is all in a print stream. These all things are the methods of print stream, right? Because I can access them with the out object, and you can read it out here. This is our output stream called print stream, and it has all those things. You can read about the things, and you can click. It can take you to the to the browser, and you can read it from there also. I think there is some questions coming up because there's chat is doing something here. Only in your class it doesn't zoom, but I don't think either it's only you who has no problems. When we click the link, the other zoom opens up, but not in your case. I don't know, because everybody is here other than you.
So you have to figure तो it out आपकी yourself. क्लास में खाली मतलब जब हम वेबएक्स पे क्लिक करते हैं वहां पे जूम पे वो क्लास नहीं चलती, वो ये डायरेक्टली मेरी ब्राउजर क्लास से की प्रॉब्लम चलती नहीं है, इट इज है। समथिंग इन अ सेटिंग ऑफ योर डिवाइस, बिकॉज बाकी लोग भी तो करते हैं ना, दे आर ऑल लेकिन हियर. सर जो दूसरे सर का वॉइस ऐप है या बाकी तालिब सर करते हैं उनकी लिंक सीधे से जूम पे ओपन होती है, आपकी क्लास की लिंक नहीं होती. I have no idea how is that happening, because other students are also clicking and they're getting here. So that means you have to figure out what is there in your side. You understand? It's on your side, not on my side. You understand? There must be something. There's still popping Okay, this sir. chat window. अच्छा ये आप So ये it कर was रहे हो me ना? just sending you the link. No, the thing is that Sir, you have to tell it directly your opens other in, friends how they are not in doing. the Zoom. You have to tell your